Okay, so I think we can start now. Just give me 1 second. Okay, so we are going to start off with a new topic today. और ये टॉपिक के लिए हमारा कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये दिस टॉपिक इज अबाउट राइटिंग स्किल्स. So I'm just going to be talking to you guys, explaining to you guys certain concepts on writing. And हम क्या करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और एक बार हमको समझ में आ गया, थोड़े एग्जांपल्स लेंगे हम कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, प्रूफ रीडिंग कैसे किया जाता है. And then after that, you guys will be given an assignment where you have to make your own, write your own essay for about, say, 200 words or something like that. Now I need is Madhuri on the call yet? Yes, sir. Hi, how are you? Fine, sir. Great. So this for today's session and for the session on Monday, we are going to be doing only writing skills. अभी क्या होगा कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगा सेशन के एंड में. तो आप वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे पूरे क्लास को एक असाइनमेंट करना होगा, एक पिक करके असाइनमेंट करना होगा. तो मुझे क्या चाहिए आपसे कि जो पार्टिसिपेंट्स है आप अभी लेक्चर में, उनके नाम आप प्लीज नोट करके रखिए, ताकि हम मंडे को जब असाइनमेंट डिलीवरी का टाइम हो तो हमको पता है कि ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे आज, और ये अपना ऐसे रीड कर पाएंगे सबको. इज दैट ओके? ओके सर. ओके, सो वो मैं बताता हूँ आपको लेटर ऑन इन दैट बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन कि क्या क्या टॉपिक्स है. But let's get started with writing skills for now. How many of you feel that writing English is difficult? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि राइटिंग लिखना, इंग्लिश में लिखना डिफिकल्ट है? चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फोन पे नहीं आना है तो. सबको इजी लगता है इंग्लिश राइटिंग? Writing is not much difficult, but speaking is difficult. Okay, fair enough. Okay, so what we'll do is I'll explain certain things to you about writing, and we'll try and make this writing scenario or situation a little more easy for all of us. Let's see what are the tools we can understand by which writing will become easy for all of us. Okay, so first of all, what is writing? Writing is nothing but it is an expression of what we think or what our views are, and it is simply like speaking only, but instead of speaking it, we're writing it down, because it is not possible every time to meet someone and speak to them and communicate our thoughts and feelings and views and perspectives. So instead what we do, we write it down. So now, important thing to understand while writing is, just like talking, we cannot be unorganized. We cannot do it in an unorganized manner. We need to know exactly what it is that we need to talk and what we need to say. Because if we do not know exactly what we need to write down, then the whole writing will be jumbled up. It will not have a clear message. Now, language is a medium of communicating our ideas, thoughts, or feelings in the form of speech or writing. Now we develop our writing ability right from childhood. हम लोग सब इंग्लिश हिंदी जो भी भाषा है, मराठी, बचपन से सीख रहे हैं, right? But what happens is कि जो हमारा लैंग्वेज जो रिटन है वो बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, because mostly हम घर पे हो या बाहर हो किधर भी, हम मोस्टली वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं.
और आज के तारीख में भी इवन अगर आप व्हाट्सएप भी यूज करते हो तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं. तो राइटिंग इज बिकम अ लिटिल नॉट वेरी कॉमन अनलाइक द पास्ट. जब आपको कुछ भी करना हो, एक लेटर भी लिखना हो किसी से, अभी फोन नहीं होता था राइट, तो हम लेटर लिख के फोन मैसेज भेजते थे. पर आज क्या, आज फोन पे, मोबाइल पे, इट्स कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल. दैट्स व्हाई राइटिंग इज बिकम नॉट सो, is become a little difficult and little something that we are not so much in touch with. But it is not difficult in the sense कि आप सीख नहीं सकते इसको, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है. और मैं आपको सर्टेन गाइडलाइंस बताऊंगा जिससे आपका राइटिंग का जो जब भी आपको राइटिंग करना है बहुत इजी हो जाएगा वो. Now what are some of the important things we need to understand while we are developing our writing skills? Now, it is easy for one to think or generate some ideas or opinions. Now, the main task, the main problem is to get the ideas organized in a logical way and then explain it to somebody via writing in that logical way, right? So, the main task is to, and also to make it interesting. बिकॉज अगर आप कुछ लिखते हो और अगर वो सामने वाला जब पढ़ रहा है उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो नहीं पढ़ेगा वो, राइट? सो इट हैज नॉट टू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेलिंग व्हाट योर व्यूज आर एंड ऑल दैट, बट हैज टू साउंड इंटरेस्टिंग एज वेल. नाउ हाउ कैन वी लर्न, हाउ कैन वी डेवलप the right skill so that it actually sounds interesting and makes the other person want to read. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ ऐसे पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, तो वो जो ऑथर ने लिखा है वो इंटरेस्टिंग है इसलिए आप पढ़ रहे हो. अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता तो आप नहीं पढ़ते, राइट? So how do you organize your thoughts and how do you organize those sentences and how do you frame the entire paragraph so that it actually sounds interesting? That's what we're going to be discussing. The first point we need to remember is learn to write good, proper English, grammatically correct sentences. Okay, first we always need to know that if our sentences are not framed correctly, if they are not in proper English, not in proper acceptable English, then it will be very difficult for the other person to understand. और क्या होता है कि अगर कोई पढ़ रहा है और उसको आप कुछ समझा रहे हो उसको, पर अगर आपने गलत इंग्लिश में लिखा है तो उसका ध्यान आपके लैंग्वेज पे जाएगा, आपके मैसेज पे नहीं जाएगा. उसको नहीं फर्क पड़ता फिर मैसेज क्या है, उसको ये ज्यादा he'll think more about the fact that you made a mistake in English language. And he will forget about the message you're actually trying to convey, no matter how important the message is. So writing good sentences is very important. Now you have to also learn to add flavors to your writing such that you are using engaging words instead of bland phrases. अभी engaging words क्या होता है, मतलब जो भी आप बोल रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो थोड़े से इंटरेस्टिंग होने चाहिए. सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है वर्ड्स को, but they have to be engaging, they have to be interesting, they can't just be a normal sentence. Like for example, if I want to say कि I saw a boy, अब ये बहुत एक सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट? कुछ अगर आप क्वालिटीज ऐड करेंगे, अगर कुछ क्वालिटीज आप ऐड करेंगे बॉय के बारे में, I saw a handsome boy, I saw a handsome boy at the college today. So आप थोड़ा स्पेसिफिक्स में जाओगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओगे वो सेंटेंस को, तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो पढ़ने में, राइट? तो आप वही सिचुएशन डिस्क्राइब करो, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो. या आई सॉ अ बॉय स्लीपिंग इन द क्लास टुडे, तो आप स्पेसिफिक हो गए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ गया उसमें. तो this way what happens is the message also becomes interesting and it is more it arouses the interest more, so the other person is more interested in reading it. So use engaging words instead of bland phrases. Make your writing more conversational. For instance, add more questions to it. Let the reader feel that they are in some situation. अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आप राइटिंग करते हो एक कॉन्वर्सेशन की तरह होना चाहिए, जहाँ पे आप ओपिनियन मांगते हो. अभी जब हम बात करते रहते हैं भी किसी के साथ, अभी फॉर एग्जांपल मैं सेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछते रहता हूँ. क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये सेशन मेरा है, ऑल्दो आई एम टेकिंग द सेशन फॉर यू, what is important is this becomes more like a conversation where you are also interacting with me. Now what happens with this interaction? You feel you are involved, right? तुम वो सिचुएशन में आ जाते हो जहां पे मैं हूं, तो हम साथ में कुछ एक सेशन हो रहा है, हमारा साथ में हो रहा है, सिर्फ मैं यहाँ आके बात करके नहीं जा रहा हूँ. सो रिटन में भी जब हम लिखते भी हैं तो ऐसा सिचुएशन हमको क्रिएट करना है जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं
या ऐसा कोई सिचुएशन होता हो कि आप रीडर आपके साथ रिलेट कर पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच सकते हैं कि you can ask like an open-ended question, or you can actually stay. I am sure you are familiar with the fact that it is very weird to see someone sleep in class. Yeah, so आपने I'm sure you agree with me बोला यहाँ पे, तो वो पढ़ते वक्त बोलेगा हाँ यार, I actually agree that it is very weird to see someone sleep in class. So I was surprised to see the same handsome boy at the bus stop every day, and I'm sure you would be too. तो आपने ये सवाल पूछा, तो ये आप एंगेज कर रहे हो रीडर को, जो पढ़ रहा है आपका पैराग्राफ या जो भी ऐसे पढ़ रहा है, वो बोल रहा है हाँ यार एक्चुअली it's surprising to see the same boy every day. So whatever the situation, मैं example दे रहा हूँ आपको, right? So try and involve the people or the person who is reading. That is very important. Make it a conversation. Next is use the paragraph style of writing, because writing whole content in a paragraph was the reader. अभी क्या होता है, अगर मैं आपको एक पेज बोलता हूँ पढ़ने और वो पेज स्टार्टिंग से एंड तक फुल भरा हुआ है, तो वो इरिटेटिंग हो जाता है यार पढ़ने, मतलब बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड और स्टफ लगता है वो। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम पैराग्राफ्स बना सकते हैं, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के लिख सकते हैं, बिकॉज दैट मेक्स दी इट्स इजी ऑन दी आईज, यू नो, और पढ़ने को भी आसानी होती है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड्स किधर है, क्या नेक्स्ट लाइन कहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यू कैन गिव वन मैसेज, then one line, one message, then one line, or something like that, one para, one line, whatever you like. But it should not be just one constant barrage of information. It could be step by step. Okay, then the transition or the shift from one paragraph to another, or from one line to another, must be a smooth ride, so that a connection is made in between the lines. अभी अगर आप 4 पैराग्राफ लिखते हो एक पेज पे, तो हर पैराग्राफ इस थोड़ा सा अलग होता है, राइट? हर पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल आपने अगर फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि आपने एक सीनरी को डिस्क्राइब किया फॉर एग्जांपल, तो सेकंड पैराग्राफ में अगर आप एक इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक रिलेशन होना चाहिए दोनों पैराग्राफ्स में, राइट? जो लास्ट लाइन होगा पैराग्राफ का, फर्स्ट पैराग्राफ का, और जो सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन होगा, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए, ताकि रीडर का फ्लो ना टूटे, उसको ऐसे लगे कि हाँ ये नॉर्मली डिस्क्राइब कर रहा है ऐसे। So there needs to be a very smooth transition, otherwise it becomes difficult. Then you could learn to use voices or speech for effective writing. So what you could do is you could actually add voices and speech for effective writing. That's up to you. The boy said whatever, so you can use someone's speech, first speech, and that will also make sense. Then use use proper punctuation, correct spellings, and develop fine vocabulary. ये तो हम ग्रामर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो punctuations, correct spellings, and develop fine vocabulary आज की तारीख में तो बहुत इजी है यार। अभी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करो तो अपने आप स्पेल चेक हो जाता है। So it is not that difficult for us today to make a good essay by, and grammar and all is automatically taken care of. But that being said, always remember to do a spell check and use proper punctuations, correct spellings, and develop a fine vocabulary. Avoid slang, jargon, fancy words and abbreviations. देखो इंग्लिश लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं यूज करते इंग्लिश में, हिंदी में भी और मराठी में भी, कौन सी भी भाषा हो, लोगों को नॉर्मल वर्ड्स यूज करना, जो एवरीडे वर्ड यूज करते हैं, वो बहुत पसंद है लोगों को। तो हमको क्या लगता है कि अगर हमको अच्छा कुछ लिखना है तो हमको सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड्स यूज कीजिए। Simple is better, it is easy, and it helps you form that flow, and it doesn't confuse the reader as well. क्योंकि अगर आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया, अभी समझो आप मुझे एक ऐसे सुना रहे हो और मुझे एक वर्ड सुनने में आया जो मुझे मतलब ही नहीं पता, फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको पॉज करूंगा, फिर मैं डिक्शनरी खोलूंगा, मैं मतलब पढ़ूंगा, देन वी कैन गो ऑन, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट, always remember simple words is fine. If you want to really use a complicated word, it is because आपके पास कोई दूसरा वर्ड नहीं है यूज करने के लिए वो इंस्टेंस पे, वो मोमेंट पे, इसलिए आपने थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड यूज किया, then it's fine. But usually I prefer things to be said simple, because the important thing is your message should be conveyed and the other person should understand your message. It is not about using the words. It is never about using the words and using the letters and making it fancy. It is about the other person understanding what you're saying. That is the key to always remember in English language and in good communication.
Okay, practice daily and try to improve yourself by reading to others or reading to yourself and trying to find out your missing charisma. So what happens is कि हम बोलते हैं कि ऐसा, if you read out loud, you know, you get better at it every day. So you can probably read it out to someone else in your family or your friends and try and get better at, you know, not just whatever you have written. Okay, तो आप जोर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि आपने क्या लिखा है, और जब सामने वाला बोलेगा कि अपने नहीं, ये it doesn't sound right, तो आपको ज्यादा input मिलेगा and then you can change. Now, there's a very basic structure when you're writing. Important is you plan, then you draft, then you edit, and then you format. अभी हम steps of writing में जाएंगे तभी मैं आपको और ये in detail समझाऊंगा. अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि simple है. You plan it, you draft it, plan करो कि क्या लिखना है. आप draft बनाइए, एक थोड़ा edit कीजिए उसको, और finally format कीजिए. Format क्या होता है कि कौन सा italics कैसे यूज करना है, बोल्ड किधर है, कुछ अंडरलाइन करना है, पैरेग्राफ कैसे करना है. So that's it. Then find out the audience for the article and try to engage the audience by using simple, clear, empathy words. Audience को engage करना obviously important है. तो अगर आप मुझे ऐसे सुना रहे हैं, तो जब आप ऐसे पढ़ रहे हो या मुझे बता रहे हो, तो ऐसे सवाल होने चाहिए कि मैं एक्चुअली सोचने लगूं कि हाँ, ये एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता है. And last but not least, never lose the essence of your assertion and try to get familiar with relevant software and platforms. This point basically means that, first of all, never lose the essence of your assertion, which means that आपको जो बोलना है, आप लैंग्वेज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आपको जो बताना है वो मैसेज ही कहाँ पे कहाँ गायब हो गया. इंपॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि आपका मैसेज क्या. अगर मैं आपको बोलता हूँ एक ऐसे लिखिए, ये जो पूरा कोविड सिचुएशन है, इस पे एक ऐसे लिखिए. अभी इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यू मुझ तक पहुंचे. आपका ये 2 साल 3 साल में सिचुएशन का क्या व्यू है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर फीलिंग्स, दैट शुड बी कन्वेड टू मी. मुझे ये नहीं जानना है कि वर्ड्स क्या यूज किए आपने. आप वर्ड सिंपल यूज करो, कॉम्प्लिकेटेड यूज करो, वेरी गुड. लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ वो ऐसे, या आप जब when you're reading the essay out to me, it is important that your thoughts are coming to me, right? So that will mean that the essay is written well. So that is important. And of course, there are different softwares and platforms as well, like Google Docs and Word and all that, which you can use while writing an essay. But yeah, that is just given. So these are a few points about why, you know, developing writing skills and how to develop writing skills, and how you can improve your writing. Are there any doubts so far? मैं constantly बात किए जा रहा था अभी almost 10 minutes, 15 minutes के लिए. Any doubts on this, on these points that I've mentioned so far? No. Okay, thank you. What about the rest of the students? Any doubts? Anyone else have any doubts? Okay, fine. So let's go on to the importance of writing. Now, what is the importance of writing? Writing is a medium of communication, and writing skills helps a person express ideas, opinions, and thoughts in an easy and clear way. Very self-explanatory. Nothing complicated here. It is used for any type of communication, such as personal or official communication. अभी ये एक चीज याद रखना कि अभी तो आप कॉलेज में हैं, लेकिन जब आस्ते आस्ते जब आप जॉब करने लगेंगे तो ईमेल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, राइट? हर चीज में आप वर्बली बात करेंगे, करेक्ट, पर कोई भी चीज को ऑफिशियल करने के लिए ईमेल लिखना बहुत जरूरी है. तो राइटिंग स्किल्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको कैसे लिखना है, कैसे sentences form करने हैं, so on and so forth, right? So written skills, writing skills, sorry, are very important in that situation. That's why this session is being conducted for you all. So try and take the most out of it. It helps to develop writing skills, also help to develop and compose any type of writing contents. तो कभी कभी आपको ये जो आपका writing skill है, आप उसको और develop कर सकते हो, and you can make it better. It also helps in bringing clarity and creativity in our writing.
जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग स्किल्स, जैसे आप और अप्लाई करते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आपका जो स्किल्स है वो बेटर हो जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी दिखेगी, जब आपने कुछ लिखा है तो बहुत और क्लियर होगा, और क्रिएटिव भी हो जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप अगर एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, थोड़ा सा फैंसी वे में बोल सकते हो उसको, थोड़ा और इंटरेस्टिंग साउंड करके, बट उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कीप प्रैक्टिसिंग. Now let's talk of the steps involved. These steps are very important because based on the topics that I give you, you will have to use these steps and then decide, and then on Monday present your essay. So what are the steps for writing? First of all, just by using good grammar or just by using fancy words, as I said, we cannot write something. Okay. Yes, there are some rules, there are some formats in writing, but we also need to have to really want to talk about something. We need to feel that the topic is of our choosing. अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ चलो आप फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कीजिए, तो डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या बोलना है, मे बी आपको थोड़ा टाइम लगेगा रिसर्च करने के लिए. पर अगर मैं आपको बोल दूं चलो मार्वल्स के बारे में बात कीजिए, या जो एवेंजर्स का मूवी था उसके बारे में बात कीजिए, या कोई भी रिसेंट मूवी के बारे में, वो इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको वो टॉपिक में इंटरेस्ट है. सो द फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर इज चूज योर टॉपिक करेक्टली. नाउ इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज, आपको हमेशा ये नहीं, ऐसा नहीं कि आपको जो टॉपिक चाहिए वो ही मिलेगा आपको, राइट? देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट, बट choose, even in that always try and choose what you want to talk about. जो चीज आपसे सबसे ज्यादा, अगर इकोनॉमी सिचुएशन के बारे में भी बात करनी है अगर इंडिया की, तो उसमें आपको क्या सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है, क्या पॉइंट है आपका, तो वो टॉपिक आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फिर क्या हो जाता है, फिर वो once you've decided on the topic that you want to talk about, then the words, then the feelings, they come out naturally, right? So it is not important to talk about things that don't interest you. Always talk about things that interest you. So the very first step is choose a topic and decide what you want to talk about. And then you get down to writing it. Now the topic can be anything from any burning issue to any sensitive point to any official matter, or it could be anything. It doesn't have to be very, very specific. But even in the topic, like I said, the example of economic situation of India, you can take any topic in that situation, that interests you. It doesn't have to be what generally people talk about. It could be anything unique to you. And we need to get a clear understanding of that topic. Okay. So step number 1 is choose your topic. Is this point clear to everyone? Yes. Okay, good. Just give me 1 second. Okay. Second point is research and collection of information. Now, obviously, once you have decided on a topic, it is also important to do some research and collect information. Only once you have done that, will you be able to start to actually getting down to writing what it is that you actually want. So after knowing the topic, the next step is to research as much as possible and collect relatable information. Collect and note all the random thoughts, ideas, and information related to it. Most importantly, research the concerning audience and try to find out what they want. Identify the main theme of content. अभी ऑडियंस आपको सर्च करने की हमेशा जरूरत नहीं है, अभी ये सिचुएशन में तो करने की जरूरत नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आप ध्यान में रख सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टॉपिक देता हूं अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, और आपको अभी बात करनी है, समझो एक 15 साल के बच्चे से, एक स्टूडेंट से, और समझो एक अलग सिचुएशन में आपको एक 30 साल के आदमी से बात करनी है, तो दोनों टाइम पे आपका राइटिंग अलग होगा ना. So that is what it's trying to say. Understand your audience. Don't just write just because you feel you should write. Because आप एक 15-year-old बच्चे के साथ अलग बात करोगे और एक 30-year-old आदमी के साथ अलग बात करोगे. So that is what the point is. Always understand your audience. In this particular situation, your audience is me. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसा है वैसे ही, जो आपके थॉट्स है आप वैसे ही प्रेजेंट कीजिए. Second point is research and collection of information. Next step is step number 3. Step number 3 is organizing content. Organizing content क्या होता है? आपने अभी रिसर्च किया, सब मैटर आ गया आपके पास,
अभी आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है. फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, अभी मैं ये लिखूंगा, फिर वो लिखूंगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, एक जनरलाइज इंट्रोडक्शन, एक आइस ब्रेकर काइंड ऑफ अ थिंग. फिर एक्चुअली आप बॉडी में लेके आएंगे, फिर आप आपके पॉइंट पे आएंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे उसमें, फिर एंड में कंक्लूजन होगा. राइट, सो दैट इज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट. So after noting down the information, you organize them in a proper sequence, create an outline of the write-up, helps in appropriately organizing the content. This is because sometimes when the article is long enough, outlines help you identify the order and help in breaking the paragraphs to get meaningful information. So organization of content is very important. Now, the next step, which is step number 4, is you start to write. Means you start writing the actual essay or the actual topic. Now, अभी राइटिंग में क्या होगा? यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स, डिविजन ऑफ पैराग्राफ्स, यूज हेडिंग, सबटाइटल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, so that it is written very interestingly and it doesn't sound boring. Once you have done that, then the writing is complete. And obviously, as I said, try to engage the audience, make it little interesting. That is so much of for writing. So writing is just a part of actually writing. The other skills are very important. Next point is revising. Once you have written, you go through it one more time, so that if you have missed something, if you are happy with it, do not assume that the first write-up is the final one, as you need to revise your content. तो एक बार आपने रिवीजन किया तो फिर आपको आइडिया आएगा. मतलब अभी आपने सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया और अभी मैं लिख दिया, मैंने आज काम किया, तो नेक्स्ट डे मैं वापस एक बार पढ़ूंगा, बिकॉज मुझे 100% श्योर है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ूंगा तो आई विल हैव सम पॉइंट्स टू चेंज. सो दैट्स हाउ यू डू योर रिवीजन. ओके, सो यू रिवाइज. Then after revision is step number 6, which is the step on editing and proofreading. Now, once you finish your writing, it is the same. It is time to do editing, formatting, and proofreading. For instance, check for spelling, grammar, punctuation, voices, speech, and sentence formation, and any other errors. Also check for commonly misused words like, for example, अब कभी effect, AFFECT को effect लिख देते हैं हम लोग, या your को you are, या it is, it's, all these small plural and possessive words में हम लोग mistake करते हैं. तो editing and proofreading is very important, which is very easy nowadays. Editing और proofreading तो हमारा word document ही कर लेता है हमारे लिए. और कोई अगर फर्स्ट स्पीच में लिखा है, सेकंड स्पीच में लिखा है, वॉइस में मिस्टेक्स है, तो वो सब हम चेक कर सकते हैं उसमें. राइट, सो दीज आर द 6 बेसिक स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स. मैं ये आपके लिए पेस्ट कर रहा हूं आपके हमारे चैट पे. So you guys can refer to it while you're writing your essay. So you see on the chat, I've pasted the steps. Please keep these steps with you. Does anyone have any doubts on these steps? Steps for effective writing? Please let me know right now. Okay, very good. So all the students in the class are clear. There are approximately 40 students. Are all 40 students clear of these steps? Yes, sir. Okay, thank you.
Okay, so let's do a small activity very quickly. We're not going to waste a lot of time because we have only 10 minutes. But I'm going to paste a sentence and I want someone to quickly tell me what is wrong with the sentence. So the sentence is, it was mined after all who does the work of the world. It was mined after all who does the work of the world. What is the right sentence? Can someone proofread this for me and tell me how it is written correctly? It was mined after all who does the work of the world. ये सेंटेंस का सही कंस्ट्रक्शन क्या होगा? Oh, sorry, I have not put it on the chat box. I think I sent it to one person. Hang on, sorry. Yeah, there it is. It was mined after all who does the work of the world. मैंने शायद सिर्फ एक स्टूडेंट को भेज दिया. वो बार-बार everyone से हट जाता है वो. Anyone? Okay. Anyone have the answer? चलो हिंट देता हूं आपको. Yes, that is the right answer. Who sent this answer? Okay, yes, Madhuri, your answer is correct. So the right answer is, it is mind after all which does the work of the world. Or you could also say, it is the mind after all which does the work of the world. Either both of them are right, depending on how you want to say it. So the right answer, sorry, वापस माधुरी को भेज दिया. The right answer is it is mind after all which does the work of the world. Okay, let's take another one. He was a Brahmin, she the Rajput. Correct the sentence. Checked for commas, full stops, semicolon. He was a Brahmin, she the Rajput.
He was a. Okay, Ankita, your reply is. He is a Brahmin and she is a Rajput. Okay, 1 second. Okay. Okay. I can see you guys are trying hard. I'll put the right answer. See, so what is the sentence? He was a Brahmin. So that is the first part of the sentence, right? So एक part हो गया. He was a Brahmin. Second part is she a Rajput. तो ये एक्चुअली दो अलग सेंटेंसेस है. She a Rajput, he was a Brahmin. पर ये दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है. तो आइडियली हम लोग सिंपल सेंटेंस क्या हुआ? He was a Brahmin and she was a Rajput. और he was a Brahmin and she a Rajput. राइट right? पर वो एंड हमने यूज नहीं किया यहाँ पे, इसलिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं. राइट, ही वॉज अ ब्राह्मण, सेमीकोलन, दैट्स अ पॉज, शी अ राजपूत. So this what I'll just paste the answer. Give me 1 second. He was a Brahmin and she a Rajput. So that is the right answer. It's okay. It takes a little bit of practice to use these colons and semicolons and commas and so on, but that's all right. But that is the correct way of saying it. He was a Brahmin, she a Rajput. Okay. Okay. Now I have 2 assignments for you guys. What I want you to do is, first of all, I'm giving you guys 2 sentences. Assignment 1 is, I'm pasting 2 incorrect sentences on your chat. And I want you guys to correct these sentences and get back to me on okay, I'm sorry, I think I pasted it twice. Okay, assignment 1, we should be devout and humble, cheerful and serene. That is the first sentence. Second sentence is high or low, rich and poor, wise and fool might all die. So I want you guys to correct these 2 sentences. Do you want me to paste it again? Or is it proper? I guess it's not proper. Wait. Give me a second. I'll paste it for you again. Yeah, now it's proper. So this is assignment number 1. Is this assignment clear? Correct the 2 sentences and please let me know on Monday. Is this clear to everyone? Yes. Okay. Now the second assignment, and this is also a very important assignment, is you have to prepare your essay. Now you have 2 days. अभी Saturday, Sunday, कल परसों तो हम मिलेंगे नहीं. हम मिलेंगे अभी Monday को. आज Friday है, right? Yes. So I'll see you guys on 31st. And what I want you guys to do is write an essay, if you want to call it an essay, or a paragraph of say about 100 words, 150 words, 200 words, whatever you're comfortable with. I'll post that as well as assignment 2.
Okay. So write an essay on any of the following topics: effects of coronavirus pandemic on the world, work from home is the new normal, will India be a future superpower, how can engineering graduates make themselves more hireable, how to end the threat of nuclear war. अभी अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक पसंद नहीं आया तो आई एम ओके, अगर आप खुद का टॉपिक भी लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। पर मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि सब पार्टिसिपेट करें। So Madhuri, 39 participants are there. I hope you have their names. Yes. Okay, because I want the list on Monday, so I can like pick and choose who, because we'll have 60 minutes, पूरे 60 minutes रहेंगे हमारे पास, और हम सिर्फ ये ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो आपका ऐसे रेडी कीजिए और I'll just pick a name and the person can read out their essay. Is that clear? Is the assignment clear to everyone, both the assignments? Yes, sir. Okay, thank you. Anyone else have any doubts? Any doubts? Anyone? Okay, so I guess I'll see you all on Monday 3 p.m. Please be on time and make sure you get in contact with your sir in case you don't get the link or something, so that we don't have such delays. And have a good weekend, guys. I'll see you on Monday. Enjoy yourselves. Goodbye. See you.